Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavan Ebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I had the good fortune of being in Calcutta in Prabhupada's time, 1975, 76. At that time, His Holiness Bhakti Raghava Swami was a brahmachari at that time in Mayapur, and he was serving. So we knew each other a little bit. I was more in Calcutta. I was doing preaching there, life membership. Bhakti Raghava Maharaj, he was out here in Mayapur, and he was doing Namhata preaching, the pioneering, the Namhata preaching. He was a real pioneer. He really sacrificed everything for going out there and preaching in the villages. You can see there's an early Back to Godhead magazine. An article was written by Anakadumbabi Prabhu. हरे कृष्णा. नाम हट्ट प्रचार में महाराज ने शुरुआत किया था. बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन जो पत्रिका है उसमें एक आर्टिकल, एक लेख भी छपा था इसके बारे में. So Anakadumbabi Prabhu, he was a pujari here. He was from the UK, and so he wrote an article anyway about Maharaja, and it was called "The Lame Can Cross Mountains." So एक यहाँ के जो पुजारी थे अनेक दुंदुबी प्रभु थे, वो यहाँ पुजारी थे. उन्होंने एक लेख लिखा था कि एक जो पंगु है वो भी पर्वत को पार कर सकता है. So he was telling about how Maharaj was preaching in the villages there, despite his handicapness physically, but spiritually he was very strong and very determined. देख सकते हैं कि महाराज कितने निश्चय करके थे कि कितने स्ट्रांग, महाराज कितने स्ट्रांग हैं कि उनके शारीरिक, उन्होंने जो शारीरिक जो उनकी सीमितताएं हैं उसके बावजूद भी महाराज जो हैं इतना बड़ा चीज़ चालू किए. So His Holiness Bhakti Raghava Swami Maharaj has been something of a visionary. In other words, he's been looking to the future and thinking about the future. परम पूज्य भक्ति राघव महाराज जो हैं एक विजनरी हैं, वो भविष्य को देख सकते हैं, जो अभी नहीं है उसको भविष्य में भी देख सकते हैं. And it's something which we all need to do. We need to see the situation on the planet and how the world is becoming more and more, everything is deteriorating so much. ये हम सबको सीखना चाहिए कि कैसे दुनिया में कैसे हमको प्रचार करना है. जैसे देखिए दुनिया की स्थिति है दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है. Young people leave the villages to go to the factories. जवान लोग अपने घर को छोड़ के, गांव को छोड़ के फैक्ट्री में जो जाके काम करते हैं. And the result is there's no young people left in the villages anymore to grow rice, to plant the rice and to cultivate the fields and take care of the cows. नतीजा ये हुआ कि चावल उगाने के लिए गांव में कोई नहीं है, गाय को संभालने के लिए कोई नहीं है, गांव में सुनसान पड़ा हुआ है. Maharaj is thinking about how to provide for the people in the future. महाराज सोच रहे हैं कि आगे की पीढ़ियों के लिए उनका खाना पीना, उनका सब आगे का बंदोबस्त कैसे होगा, महाराज अभी से सोच रहे हैं. We used to be able to buy potatoes for 1 or 2 rupees. Now it's 10, 15 rupees a kilo.
पहले 1 रुपये किलो आलू मिलता था, अभी 15 रुपये किलो मिल रहा है, and it's going to go up every day. और हर दिन ये बढ़ ही रहा है. The prices are not going down, they're all going up. वो कीमत घट थोड़ी रहा है, बढ़ ही रहा है. How will we ever be able to feed the people? दुनिया के लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा कल? But actually we have land, but we're not using it. हमारे पास ज़मीन है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं. We're thinking only about sense हम gratification. केवल भोगों में लिपटे हुए हैं. We want to get mobile phones and to watch movies all day. हमको मोबाइल फ़ोन चाहिए, दिन भर हमको मूवी पिक्चर देखने के लिए फ़ोन चाहिए. And so the influence of Kali Yuga becoming very strong, people becoming lazy and more ignorant. तो हम देख सकते हैं कलयुग का प्रभाव कि आदमी कैसे मोबाइल फ़ोन यूज कर रहा है, मूवी देख रहा है, आलसी बन रहा है और अज्ञानी बन रहा है. But the most pious profession is to do farming, to take care of the land and the cows. ये सबसे अच्छा पुण्य का काम है कि आदमी खेती करे और गाय संभाले. Right? Lord Krishna had a flute for calling the cows, and Lord Balaram had a plow. कृष्ण भगवान के पास मुरली था गाय बुलाने के लिए, और बलराम जी के पास हल था खेत को चलाने के लिए. So they came to show us what we need to do in this Kali Yuga. कृष्ण बलराम आए ये दिखाने के लिए कि कलयुग में हमको क्या करना है. We need to farm, we need to grow food. हमको खेती करना होगा, खाना उगाना होगा. We cannot just simply go to the shops and purchase all the time. हर समय आप जाके दुकान से खरीद के लाइएगा तो चलेगा नहीं आगे जाके. I was in Malaysia, and one couple who were disciples of Maharaj, they were telling me Maharaj was coming to their home, but he had told them that I will only eat what you grow. मलेशिया महाराज गए थे, महाराज जी गए थे, तो उन्होंने वहाँ सुना कि एक बार वहाँ पे परम पूज्य भक्ति राघव महाराज गए थे, तो उन्होंने उनको कहा कि मैं वही खाऊंगा जो तुम उगाओगे, जो बाहर से खरीद के लाए हम नहीं खाएंगे. So when I heard that, I thought, this is really very nice. This is a wonderful example. मैं जब सुना तो मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया चीज़ है, इतना आश्चर्यजनक उदाहरण है ये तो. You want Maharaj to eat your food, you grow it yourself. आप लोगों को कह रहे कि अगर आपको महाराज को खाना खिलाना है तो खुद उगाइएगा. Then you cook it and offer to Maharaj. और उसको बना के फिर आप महाराज जी को दीजिएगा. This is the nice example, wonderful example which Maharaj shows. महाराज ने इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है दुनिया को दिखाने के लिए. He's encouraging all of his disciples to do what we need to do to cultivate the land. हम उनके सारे शिष्यों को सिखा रहे हैं कि हमको ये करना ही होगा, जमीन को खेती करना ही होगा हमको. Don't just go to the factories and think about making money. फैक्ट्री में जाके पैसा नोचने का खाली मत सोचो. You cannot eat rupees. पैसा खाओगे क्या? The rupees value less and less and less. पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा. Right? We used to come, I remember going to Radhakund, and they would give you all the coins, paisas. And we will go and put 10 paisa like that. राधाकुंड में जाते थे, 10-10 पैसा हम लोग वहाँ पे देते थे, याद है. Where is 10 paisa today? आज 10 पैसा कहाँ है? Even 10 rupees today. 10 रुपया का भी कोई वैल्यू नहीं. You won't even get the rickshaw for 10 rupees. 10 रुपये में रिक्शा वाला भी नहीं उठाएगा. So this is the situation. ये हालत है. We need to understand. Take care of the land, grow food ourselves, don't depend on others. ये समझ लो कि अपना खाना खुद उगाना है, दूसरे पे निर्भर मत रहो, खुद उगाओ और खुद खाओ. And Prabhupada wanted so much that we would take care of the cows and grow nice food. और प्रभुपाद इतना चाहते थे कि आप लोग गाय संभालना और अपना खाना खुद उगाना. When Prabhupada would go to visit some of our farming communities, the devotees would bring the vegetables they were growing. Prabhupada would be so pleased. जब प्रभुपाद किसी कृषि क्षेत्र में जाते थे और वहाँ पे भक्त लोग अपना उगा के प्रभुपाद जी को ला के देते थे, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे. He wanted us to do these things. It's so important for the world. प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम ये सब करें क्योंकि दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, बात समझिए. So I'm very grateful to Maharaj for emphasizing the need for these things today in this world.
मैं महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये चीज़ की ज़रूरत को लोगों को कैसे गहराई से समझा दिया है कि क्या ज़रूरत है आज के समाज की. And we need to do it ourselves, you know, we need to go out there, go in the fields and get our hands dirty with the soil of the earth. और ये खुद करना है, किसी दूसरे को करने के लिए मत बोलिए. जाके खुद जाइए खेत में, जरा मिट्टी लगाइए हाथ में, हाथ गंदा होगा तब आप समझिए कि आप सही काम किए हैं. ये नहीं कि सुन के बोल दीजिए किसी को जाके. Grow some nice vegetables to offer to Krishna. कुछ बढ़िया सब्जी उगाइए, कृष्णा को वो सब खिलाइए. Of course, it's not easy. It's hard work. ये आसान थोड़ी है, बहुत कठिन है, मेहनत का काम है. And sometimes it seems like you're not getting much result. कभी कभी ज़्यादा निकलेगा भी नहीं उसमें से. You have to spend so much time to take care, to water and to weed. इतना समय लगता है, उसको पानी दीजिए, उसका घास निकालिए, बहुत टाइम लगता है सब करने में. It's so easy for us just to go to the shop and purchase. कितना आसान है, दुकान में जाओ, पैसा दो, ले आओ. Especially when we come from the West, we think 1 rupee, we get 77 rupees. $1, we get 77 rupees. हम जब अमेरिका से आते हैं इधर पाश्चात्य देश से, $1 देते हैं, 77 हो जाता है, तो और आसान दिखता है. And when we go to market, we think, oh, very cheap. बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है. And Prabhupada would call us, he said, damn cheap Baba. प्रभुपाद हम लोग को धाम सस्ता बाबा बोलते थे. We would think cheap. Prabhupada said, you paid 3 times the price. प्रभुपाद हम लोग कुछ खरीद के लाते थे सस्ते में, हम लोग को लगता था बहुत सस्ते में लिया. प्रभुपाद अरे तुमको ठग लिया, 3 गुना लिया तुमसे. So if we don't want to be cheated, we should go in the garden, go in the fields ourselves, and grow the vegetables, produce some nice fruits and nice vegetables, and we can grow grains also. We have to learn how to do these things. अगर आपको ठगाना नहीं है तो अपने से जाइए, खेत में उगाइए, उगा के जब लेके आइए तब आप अपना चीज़ अपने से उगाना सीखिए. So I'm very grateful to Maharaj that he is really emphasizing this kind of lifestyle and he's encouraging this for all the devotees. मैं बहुत आभारी हूँ कि महाराज जी इस तरह के जीवन शैली को सिखा रहे हैं और भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं कि सब लोग इसमें जुड़िए. It's a very nice example and it's very much needed more and more. बहुत ही बढ़िया उदाहरण खुद प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत जरूरी है, जैसे से दिन बढ़ रहा है बहुत बहुत जरूरी है सब. Prabhupada told us, don't think this modern society will go on forever the way it is. प्रभुपाद ने कहा ये दुनिया और ये आधुनिक सभ्यता ज्यादा दिन नहीं चलेगा. It's all going to fall apart. ये सब टूट के बिखर जाएगा आधुनिक सभ्यता. It's already happening in front of our eyes, but we're not seeing it. हमारे आँख के सामने हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है. We have to understand the urgency. It's really important for us. Get some land, grow some food, take care of your own basic needs. ये बहुत आकस्मिक चीज है कि अब बस जमीन लीजिए और अपना खाना उगाइए, अब समय नहीं बचा है. And this will be very pleasing to Maharaj and to all the devotees and to Lord Krishna also. ये महाराज को प्रसन्न करेगा, भक्तों को प्रसन्न करेगा, कृष्ण को प्रसन्न करेगा. Okay, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Maharaj, for encouraging all of us how important it is to grow. Maharaj has written a book, Make Vrindavan Villages. He has put a nice, I think, Prabhupada's quote in that book. Produce what you need, eat what you produce. It's a Prabhupada's quote. Maharaj always reminds this. We thank you, Maharaj, for reminding all of us. Now we have a small unveiling the Surabhi Mantra box, specially designed so that will be Maharaj encourages all of us to put it in Goshala, in your homes, everywhere. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Shurabhe Namaha Om Shurabhe Namaha Om Shurabhe Namaha So Maharaj, yeah. Eh? Oh, this one's good. we are just launching today. You can. We lost our translator. We are launching today what is called the Surabhi Mantra. हरे आज सुरभि का जो मंत्र है इसका विमोचन हुआ है. Many devotees in ISKCON know about the Prabhupada mantra, chanting Hare Krishna. प्रभुपाद मंत्र का मशीन है, आप लोग देखे होंगे, बहुत लोगों के पास होगा भी. हरे कृष्णा मंत्र प्रभुपाद जी का बजता है. I was just mentioning to Maharaj that here in India there is a Goshala, the largest Goshala in the world. They have between 1 lakh and 3 lakhs of cows. भारत में गौशाला जहाँ 1 लाख से 3 लाख गायें. On the corner, on the border of Gujarat and Rajasthan, Patmera. पथमेड़ा गौशाला है जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे. Their Mangalarati is Mangalarati to Mother Cow. उनका जो मंगल आरती होता है गाय के लिए होता है. And they constantly play this Surabhi mantra, which is actually from Shastra. ये सुरभि मंत्र जो है शास्त्रों में बताया गया है कि जो गौशालाओं में बजता है तो ज़्यादा अच्छा होता है. So the first time I went there quite some years ago, I came to know about the Surabhi mantra. पहली बार जब मैं बहुत साल पहले गया था तो मुझे ये पहली बार ही पता चला है मंत्र के बारे में. And we gradually, actually, the devotees singing are from Bali, Indonesia. They are like a very good, Indonesia devotees are very good singers actually. बाली इंडोनेशिया में कुछ भक्त हैं जो गाने में वहाँ के भक्त लोग ऐसे भी बड़े माहिर होते हैं. So on this occasion, since Maharaj has been very kind to attend our program and to unveil this Surabhi mantra, I would like to offer him the first. आज पहली बार ये विमोचन में मैं उनको ये गिफ्ट देना चाहूँगा महाराज को. हरि बोल. आपके पास गौशाला की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं. And this is some cow product. और ये प्रभुपाद जी की तरफ से. Hare Krishna. Hare. This is a special handmade chanting bag. This is devotees have grown their cotton and ये स्पेशल made the cloth and stitched the chanting इसका bag. जो कपास है भक्तों ने अपने से उगाया है, उसको बनाया है कपास को अपने से, और ये बीड बैग अपने से बनाया है, सिया भी खुद से है. ये पूरा का पूरा तरह हस्त निर्मित है. Hari Hari Bol. Bol. Thank you, Brother. Yeah, we have also given some special gifts. It's a handmade cloth. The cloth, the given Uttariya. It's actually this devotee, a couple of devotees working from Amshu. Maharaj inspired. This is the cloth. Like Prabhupada wants food, shelter, and clothing. 3 things to be sustainable. This one vertical which is working on cloth, just from scratch of growing Indian cotton and just weaving with handmade and hand woven and naturally colored. So it's a very special cloth made by devotees who are chanting 16 rounds every day in the morning. Yeah. So it's made by devotees. एक भक्त हैं अमसु प्रभु हैं यहाँ पे, वो 16 माला जप करते हैं. उन्होंने कपास उगाया है और उगा के भक्ति भाव से इसको बनाया है. और ये रोटी कपड़ा मकान जो 3 चीज़ होता है हमारी ज़रूरतों के लिए, उसमें से एक है कपड़ा. तो कपड़े को उन्होंने अपना जो उगा के दिखा दिया. Not only are they making bead bags and
the devotees actually making this cloth have already supplied many of our temples the murti of Srila Prabhupada, complete set of cloth, natural cloth. प्रभुपाद जी के मूर्तियों के लिए वो कपड़े भी भेजते हैं और इसका जो रंग है रंग को भी वो लोग खुद उगा के बनाते हैं, रंग भी बाजार से नहीं खरीदते हैं, इसमें रंग भी जो है नेचुरल है. And now the latest also we should have had, that should be part of a demonstration here. The latest, which is part of this initiative, is that Anantatirtha Prabhu, who is heading up this project, is training some of our Gurukul boys to make this thread with the idea of reviving the ancient culture where Brahmanas used to make their own thread. So we will supply all the sannyasis in ISKCON with this thread, beginning with Maharaj. महाराज कह रहे हैं कि जितने ये जो पारंपरिक रूप से वो जो है उसको बनाया जाता है तो ब्राह्मण लोग उसको जो सूत बना के उसको जो कपड़ा बनाते हैं, तो ये हम कल्चर को फिर से सभ्यता को लाना चाहते हैं. तो हमने शुरुआत किया है, तो सबसे बड़े ब्राह्मण जो महाराज जी हैं, महाराज जी को हमने दिया है. हरि बोल. हरि बोल. Thank you, Maharaj, for your time. Thank you. Hare Krishna.